Hello students, welcome back to Chalk, Chai and Zindagi. Today we are going to study one of the most beautiful story, The Rat Trap by Selma Lagerlof. Though it appears to be the story of a poor paddler, but it actually teaches us the value of kindness, compassion and redemption. Keep your NCERT textbooks with you, read the chapter carefully, and use these visual notes for smart learning. So let's begin. Now, first of all, this is the month, August is the month, and even in July and August, you should thoroughly read your NCERT books, the chapters, so that you know the story and summary of the story. My notes, they are for quick revision, right? Although the story, you will understand story from here also, but they are for quick revision and it is called smart learning. You will not waste much time because at the time of the examination, you won't be able to read your chapters in detail. 7-8 pages for every chapter, it will take long time. So once you have read it thoroughly during the month of July and August, I think it will help you. And this is called smart learning, where before the examination, you can go through these notes and you will be scoring good marks. Let us start this chapter, The Rat Trap. First of all, let's look at the characters at a glance. The protagonist is the rat trap paddler. He's a poor vagabond, right? And he travels from one place to another selling rat traps, which, he makes himself. And usually his survival is by begging, petty thievery, and selling the rat traps which he himself have made. And his philosophy is he believes the world is a giant rat trap because he sells rat traps. So his philosophy is also based on that, right? And you will see him opportunist, but he is capable of change, transformation. You will find him in the end, he is completely changed person. Then we will meet the old crofter, a good human being, right? He lives alone in little grey cottage by the roadside. Old man without wife and child, simple, generous, hospitable, lonely and happy to get someone to talk to. Earns his living by selling his cow's milk for the creamery. Victim of paddler's theft. So what happened? He was lonely, why? Because he doesn't have his wife and children, right? And first he used to work in iron mill. Now, because he has become old, now he sells his cow's milk and earn money for his day-to-day needs. Then we will meet the Iron Master. He is an army officer and then he became a successful businessman. And he is the owner of Ramso Mill, iron mill, and he believes in quality of good products. He is hasty and haughty, short temper hai. And first, before, when he is on round, he mistakes the paddler for an old acquaintance. वो सोचता है उसके साथ आर्मी में कोई पुराना उसका वाकिफ है, जान पहचान वाला है, जो कि अब उसका बुरा वक्त आ गया इसीलिए उसकी हालत ऐसी है, राइट? एंड उसको इनवाइट करता है अपने घर में. And in the end, when he comes to know that he is the rat trap and not his acquaintance, rat trap paddler है, उसका acquaintance नहीं है, so he scolds Adla and he tells Adla to hand over the paddler to the sheriff, the police. And the most beautiful human being, with a beautiful soul is Adla Wilmanson. She is daughter of Iron Master. She's kind, compassionate, shy, modest and humble. Beautiful qualities she has. Keen observer, sharp intelligence. It is her kindness and understanding which brings the hidden goodness in the paddler. And she receives the gift of rat trap with a letter and 30 kroners, which the paddler returns to the old crafter in the end. She is the one who changes him, entirely. Right? Now let's see the rat trap paddler. Everything about him is in these notes. Right? Once you have thoroughly read your chapters from the NCERT book, these notes are going to help you in quick revision. Right? And
it is smart learning and smart teaching also, because we will be discussing CBSE questions, what type of questions they give and the answers, how to give answers also side by side, right? He's a poor vagabond who travels from one place to another selling rat traps, and he makes rat trap himself only. And how? By begging for the material. He collects from stores and big farms, and then he goes to from one door to another to sell his rat traps. And his business is not profitable. And to keep his body and soul together, he has resort to begging, petty thievery, and selling rat traps. Now this question comes for 2 marks, that how rat trap seller, he what was his occupation, or how he used to live, how he used to maintain his body and soul. So you will write down that he used to do begging, he was involved in petty thievery, छोटी मोटी चोरियां करता था, और अपने ही बनाए हुए selling rat traps. Okay, so this is 2 marker, 2 value points you can write down and you get 2 out of 2. Now look at his appearance. He is poverty stricken. बेचारे को पूरा पेट खाना कहाँ मिलता होगा, कभी तो उसका rat trap बिक जाता होगा, कभी नहीं होता होगा. Clothes in rags, sunken cheeks and hungry eyes, long beard and rat traps dangling from his chest. Poverty stricken, please देखो इसका विजुअल अपने दिमाग में रखना, आप आंसर कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं आती. विजुअल्स इसीलिए मैं दे रही हूँ क्योंकि हम विजुअल्स में बहुत अच्छे होते हैं. कई चीज़ हम याद करते हैं लेकिन भूल सकते हैं, पर विजुअल्स वी कैन नॉट. Sunken cheeks, right? Hungry eyes, torn clothes, in rags, and rat traps dangling from his chest. So this is his appearance. Occupation मैंने बता दिया वो क्या करता है, and then I have told you his appearance also. Now let's see his philosophy. Now his philosophy is, based on rat trap only, because he sells rat traps, so his philosophy is also based on that. And other thing is, this question comes for 5 marks, 3 marks for content, and 2 marks for your expression. So at least 4 value points should be there, है ना. और मैं तो चाहती हूँ कि आप ये सारे value points लिख के आओ. अगर 5 marks का question आता है, you can score 5 out of 5, because this is also, you don't have to, delete anything, right? Or you don't have to add anything. Let's see. One day while thinking about rat trap, he was struck by the idea that the whole world about him, with its land, its seas, city and village, was nothing but a big rat trap, right? क्योंकि वो rat trap बेचता है, उसे लगता है दुनिया भी rat trap है, चूहे दाने हैं. It had never existed in any other purpose than to set baits for the people. Bait क्या होता है? जो लालच हम देते हैं. जैसे हम चूहेदानी में रोटी का टुकड़ा लगा देते हैं, पनीर का टुकड़ा लगाते हैं ताकि चूहा उसमें फंस जाए, राइट? इन द सेम वे वो कहता है दुनिया में भी लोग हमारे ऊपर बेट्स लगाते हैं जिसमें हम फंस जाते हैं. और वो बेट्स हो सकते हैं रिचेस, जॉयस, या शेल्टर, या फूड, राइट, क्लोथिंग, कुछ भी हो सकता है. एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोक. एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, जैसे चूहा होता है वो टेम्प्टेड हो जाता है, वो रोटी के चक्कर में वो अंदर चला जाता है. इसी तरह इंसान भी वो सोचता है कि वो भी टेम्प्टेड हो जाता है. जैसे कि स्टोरी में वो आप देखोगे क्रॉफ्टर के 30 क्रोनस चोरी करके ले जाता है, टेम्प्टेड होता है उससे, राइट? वो बेट था उसके लिए, राइट? सो ही टच्ड द बेट, इट क्लोज्ड इनटू हिम एंड देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड. और उसी चक्कर में वो फंस जाता है. वो चक्र भी होता है जो खत्म नहीं होता, और उसी में इंसान जो है फंस जाता है. सो लालच बुरी बला है, राइट? सो वी शुड नॉट बी ग्रीडी, राइट? सो वाई डिड ही थिंक सो? अगर हम देखें कि वो ऐसी दुनिया के बारे में ऐसी बात क्यों कहता है कि लोग सारे जो है उसको बेट देते हैं हम गरीबों को, ना, क्यों कहता है? बिकॉज ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का आता है. वाई ही थिंक्स लाइक दैट? बिकॉज द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम. कभी भी उसको अच्छे से किसी ने बात नहीं की, राइट? इट गेव हिम एम्पल रीजन टू थिंक इल ऑफ इट. इसीलिए वो उनके बारे में हमेशा बुरा सोचता था. इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had left themselves to be caught in the dangerous snare, and others who will still circling around the bait. So because the world was never kind to him, and second also, it was his cherished pastime to think ill of the people. This also question can come, 2 marks. Why did he think like that? So you have to give the 2 reasons. Now let's see his character traits. He's intelligent, right? Philosophy इतनी बड़ी उसने निकाली है, काफी हद तक ठीक भी है. Thoughtful, observant and clever. He is opportunistic. जैसे क्रॉफ्टर उसको अंदर बुलाता है चला जाता है.
left to his own meditation while wandering from place to place. Right? So you can take the screenshot. Remember the visuals. Riches, food, shelter, comforts जो है हमारे बेड्स हैं. Right? और वो ऐसा क्यों सोचता है ये भी, and his characteristic. Right? Now this is important question can come from this his meeting with the old crofter. How does he meet him? What does the crofter he proved to be a very good, how does the crofter prove to be a good host? All these things we will be discussing. And what did the peddler do with him? Right? Let's see now. The peddler, and when he's moving, right, he wants to sell his rat traps from one place to another. He sees a grey cottage by the roadside at night time, and he knocks at the door, right, and asks for shelter for the night. And he was not refused. The crofter was so warm. He welcomed him, right, and with a smile. So he asked him to come inside, and not only that, he showed warm hospitality also. What did he do? Why? Because this man, he didn't have wife, he didn't have children. And he wanted someone to talk to. इसमें loneliness भी एक theme है इस पूरी story में. आप देखोगे पैडलर भी lonely है, उसके बाद क्रॉफ्टर भी है, उसके बाद when we will meet the army officer and Adla. Everybody is lonely here. They want somebody to socialize with them. They want somebody to celebrate something with them. So crofter, he welcomed him. And he immediately put the porridge pot on the fire and gave him supper. Supper is the dinner. And then he carved off a big slice from tobacco roll, enough for both the stranger and his own. And finally, they played majulis, right, with guests, and they slept. So these are the things which he did. He prepared porridge, he gave him tobacco, and then they played the card game also. So remember the visuals. You have to write down all this in your answers. How did the crofter showed his hospitality? So you will be covering all these points, right? And also you will say that he welcomed him with smile. Okay, beta. Now let's see the crofter. He trusted him so much. He's in his simplicity and confidence. The crofter shared the secret of his earning also. He proudly told the peddler that he has received 30 kroners from the creamery, because he sells his cow's milk, and then he got 30 kroners. He even showed him where he had kept the money. The old man trusted the peddler completely because he considered him as his guest. Also, loneliness. There was nobody to share his, happiness, share his day-to-day life. So when he got peddler to listen to, then he started telling him everything. His innocence and trust made him an easy victim. Right? Then what happens? The next day the crofter went to milk his cow and locked the room, keeping the key in his pocket. And peddler also said goodbye. अपना दोनों निकल गए वहां से and went away. लेकिन आधे घंटे के बाद the peddler returned. He broke the pane of the window, put in his hand and took out the pouch containing 30 kroners. He took the money and thrust it into his pocket. Then he hung the pouch back carefully in its place and he went away. So पेडलर ने उसका ट्रस्ट तोड़ा, क्रॉफ्टर ने उस पर ट्रस्ट किया, बट उसने उसकी चोरी कर ली. राइट? सो दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. हाउ डिड द क्रॉफ्टर शोड हिज हॉस्पिटैलिटी एंड व्हाट डिड द पेडलर डू? This can come in long answer 5 marks, right? So you will be covering everything. The peddler, how did he arrive at the cottage? Then how he was given the hospitality. Then the crofter, how did he showed his trust on him? And then the theft, right? ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो और आपको 5 मार्क्स में से 5 you can get if you cover all these points. Now let's see the after when he left, as he walked along the he had money. उसको मनी था और उसको ये भी डर था कि अगर मैं सड़क से जाऊंगा तो आई विल बी कॉट बाय द पुलिस, क्योंकि शायद जो क्रॉफ्टर है शिकायत कर दे. राइट? सो व्हाट ही डिड वाज, उसने ही वॉज क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस. ये आपको आरटीसी में आया था कि उसको कैसा लग रहा था जब उसने चोरी करके वो जंगल की तरफ जा रहा था. तो ही थॉट ही इज वेरी स्मार्ट. स्मार्टनेस के कारण उसको बड़ा प्राउड फील हो रहा था, विदाउट रियलाइजिंग दैट ही हैड वॉक्ड स्ट्रेट इनटू द वुड्स. जंगल के अंदर चला जाता है अपनी स्मार्टनेस के चक्कर में. राइट? और ही इज लॉस्ट इन द फॉरेस्ट
and then he remembers his own philosophy, the world is a rat trap. अब उसको लगता है कि मैं भी तो rat trap में फंस गया, मेरे को भी बेट मिला और मैं फंस गया, क्योंकि अब जंगल से बाहर नहीं आया जा रहा, उसको घूमे जा रहा है एक ही जगह पे, इधर से उधर उधर दोबारा आ जाता है, राइट. सो दिस इज हाउ ही सेज द बेट इट ट्रैप्स यू. ठीक है बेटा. सो ये पूरा एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ सकता है आपको क्रॉफ्टर के ऊपर, इज हॉस्पिटैलिटी एंड एवरीथिंग एंड द थेफ्ट एंड व्हाट डिड द दिस पैडलर थॉट अबाउट हिमसेल्फ, राइट. नाउ लेट्स सी हिज क्वालिटीज. क्रॉफ्टर, ही इज सिंपल, जनरस, हॉस्पिटेबल, ट्रस्टिंग, lonely but eager for company, right. He was just as generous with his confidence as with the porridge and tobacco. ये हमने NCERT की ही लाइन लिखी है. You can also quote. जितना आप NCERT के डायलॉग्स वर्ड्स कोट करोगे उससे अच्छे मार्क्स मिलने की हमेशा उम्मीद होती है. Okay. The money is in the leather pouch behind that nail on the wall. That is what he said. ये पाउच में है, उसने बता भी दिया कहाँ पे उसने रखा है, right. Okay, take the screenshot. Crofter is समझ आ गया आपको? Okay. Type of question वो भी. Now let's start with he's lost in jungle and a new turn in his life. अब क्या हुआ, वो जंगल में जा रहा है but he's lost. उसको बेट उसने लालच किया and वो फंस गया उसमें. तो after stealing the 30 kroner, he left the crofter cottage, entered the forest. He walked on but he lost his way. And it was night, dark, cold and silent. He was tired also, he was hungry also, and at the same time he was frightened also. डर रहा है, जंगल में अगर हम अकेले जा रहे हो तो डरेंगे ही, right? In that lonely moment he realized that he himself had been trapped. His greed for 30 kroner, the bait had caught him in the rat trap of his life. He had set traps for other, but now he himself is caught into it. अब तभी उसको दूर से हथौड़ों की आवाज आती है ना, तो उसको दिखता है कि रैम्सो आयरन मिल है. लेट एट नाइट द पैडलर रीच्ड रैम्सो आयरन मिल्स सीकिंग शेल्टर. उसे लगा कि अब ठंड भी पड़ रही है और वहाँ भट्टियाँ चल रही होंगी. ही कैन स्लीप, पूछ के परमिशन लेके ही कैन स्लीप देयर. द आयरन मिल वॉज अलाइव विद द ग्लो ऑफ द फर्नेसेस. भट्टियाँ जो चल रही होती हैं. द साउंड ऑफ हैमर, द नॉइस ऑफ मशीन्स एंड द स्मोक फ्रॉम टॉल चिमनीज फिल्ड द एयर. द आयरन मास्टर आफ्टर विजिटेड द मिल एट नाइट टू इंस्पेक्ट द वर्क. He was very strict about quality and took pride in producing the best iron. The iron master, he worked so hard for good quality iron, to give good quality iron to the people, and shows that he believed in honesty, duty and excellence, right. अब आयरन मास्टर जब वहाँ राउंड लगा रहा होता है तो वो इसको पैडलर को दिखता है, राइट. अब उसे लगता है, आयरन मास्टर ने देखा कि फर्नेस के पास कोई बैठा हुआ है, लेटा हुआ है. He was tall, proud and well-built man. ये कौन था? Iron Master, because वो आर्मी में था. He looked at the peddler carefully and told, "This man looks exactly like an acquaintance of mine." उसको देख के उसको लगता है कि शायद ये कोई आर्मी में मेरे साथ था, इसका बुरा वक्त आ गया है. That is why he is looking like this. He warmly invited him to celebrate Christmas at his home. The peddler felt suspicious and he refused. तो उसने पहले उसका इनविटेशन मना कर दिया, राइट. क्यों मना कर दिया? मैंने एक रीज़न ये देना है कि उसको, क्योंकि उसने 30 क्रोनर्स चोरी किए थे. ही थॉट दैट ही विल हैंड मी ओवर टू द शेरिफ. नंबर टू उसने सोचा कि अगर मैं इसको डिक्लाइन करता हूँ इनविटेशन को तो शायद ही विल हैव पिटी ऑन मी एंड ही विल गिव मी सम मनी. ये 2 रीज़न थे, उसने उसकी इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया. 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 वैल्यू पॉइंट्स. उसे लगता है दिस इज अ ट्रैप एंड दे विल हैंड हिम ओवर टू द शेरिफ बिकॉज ही हैज स्टोलन 30 kroners ऑफ द क्रॉफ्टर. सेकेंड थिंग इज ही थॉट दैट maybe he will have pity on his condition and he wanted, the peddler wanted to extract some money from him. Right beta? 2 marks question. Okay? अब हम देखते हैं यहाँ पे. अब जब वो नई इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करता तो आयरन मास्टर ही गोज बैक होम एंड ही टेल्स हिज डॉटर एडला विलमेंसन, and then when he narrated the incident she said, no, I'll go and invite him since he is your old acquaintance. So कहती मैं जाती हूँ उसको बुलाने के लिए. And she goes. Adla, she is very kind, compassionate, humble, gentle, and she persuaded her father that she will go and invite him because since he is one of his
फादर्स अक्वेंटेंस, उसको जानने पहचाने वाला उसके फादर का आर्मी में उसके साथ था, तो वो कहती मैं लेके आती हूँ उसको. She went to iron mill with her servant and requested the peddler to spend Christmas with him. Adla sensed that peddler was either a runaway or someone who had stolen something. ये उसकी इंटेलिजेंस दिखती है. उसने पहचान लिया था कि या तो इसने कहीं से दौड़ के आया जेल से, या इसने कोई चोरी की है. उसने उसके फेस के हाव भाव एक्सप्रेशंस देख के शी केम टू नो कि समथिंग इज रॉन्ग विद दिस फेलो. ये आरटीसी में आता है, ठीक है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में, तभी मैं 2 बार बता रही हूँ आपको. Yet, she treated him with kindness, respect and dignity instead of judging him, right? And her warmth and respectful behavior made the peddler agree to accompany her, right? So peddler उसके साथ चला गया, right? So what, right? Adla looked beyond the peddler's appearance. Her compassion was the first step towards his ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? मान गया तो इसका मतलब वो बदलने को तैयार है. सो शी इज काइंड हार्टेड, कंपैशनेट, सेंसिटिव, वाइज बियॉन्ड हर ईयर्स, बिलीव्ड इन हेल्पिंग अदर्स इन नीड. अ जेम ऑफ अ पर्सन, डायमंड फ्रॉम हार्ट, राइट? शी इज अ लेडी विद अ डायमंड हार्ट, दैट इज व्हाट आई कैन से, राइट? अ गुड ह्यूमन बीइंग. ओके, समझ आ गया आपको? जंगल में आयरन मिल, आयरन मास्टर उसको इनवाइट करता है, एंड देन एडला, right? Now let's see what Adla does. She is the true spirit of Christmas, right? Peddler go with Adla because the peddler did not correct the iron master when he mistook him for his old acquaintance Nilf Alof. उसको Nils Alof करके बुलाता है, लेकिन वो भी उसको करेक्ट नहीं करता. He thought the iron master might take pity on him and give him some money, right? Hoping to extract some money from him, he declined the invitation, right? Later, the ironmaster sent his daughter Adla Wilmanson, persuaded him to come home with her. Now, Adla takes him to the house. Now, what does she do? The moment she saw him, she realized that something is wrong with him. Either he had stolen something or he has escaped from the jail. Yet she spoke politely to him. Her warmth, kindness, choice of words were reassuring and enough to earn the peddler's confidence. पेडलर को लगा कि कुछ भी हो जाएगा, ये मेरे साथ गलत नहीं करेगी, एंड शी टुक हिम टू देयर हाउस विद हर सर्वेंट. अब उसकी कंडीशन बहुत गंदी थी, नेचुरली पेडलर था, नहाता नहीं, गंदा कपड़े पहने, सब कुछ, ही वॉज वेरी पुअर, पॉवर्टी स्टिकन था. तो व्हाट डिड दे डू? दे गेव हिम बाथ, हेयर कट एंड शेव, एंड शी गेव हिम हर फादर्स ओल्ड सूट, एंड देन ही हैड क्रिसमस मील. लेट्स सी, पेडलर वॉज स्क्रब्ड एंड bathed, he was given a haircut and a clean shave. He was dressed in one of the ironmaster's old suit as a Christmas gift. He was treated with dignity, respect and love. A delicious Christmas meal was served to him. Right? And then, in the morning, the truth was revealed. When the ironmaster sees him morning, because he is now neat and clean, so he realizes that he is not Nils Alof, one of his old acquaintance. The vagabond was not his regimental comrade, Nils Alof. He felt cheated and was very angry. He wanted to call the sheriff and hand the peddler over to the police. Right? The peddler was agitated. अब जब वो peddler को लगता है कि ये पुलिस को बुला रहा है, तो वो फिर कहता है कि तुम, ये दुनिया रैट ट्रैप है, तुमने मुझे बेट दिया, एक दिन तुम भी उसमें फंस जाओगे. Again he started his philosophy. Iron Master हंसने लग जाता है. लेकिन Adla, she tells her father, that no, we will not. Let him celebrate Christmas with us. Right? Let him sleep, comfortably without any tension in our house. She didn't let him go. So why? Because she was very kind, compassionate, sympathetic, considerate, extremely well spoken, gentle, and she spoke in peddler's support also. And she requested her father not to send him away, right? And she believed that Christmas cheer should be for all. Her value of humanity and compassion were deeply rooted, right? A selfless and generous attitude brought about a transformation in the peddler. प्यार एक ऐसी भाषा होती है बेटा, एनिमल भी समझता है. प्यार से आप किसी का भी मन जीत सकते हो. तो एडला ने भी वही किया. उसको पता था ये चोरी करके भागा है या जेल से भागा. Then also, she gave him respect, she gave him compassion, उसको understanding दिया, and that really transformed that man. Right? अब आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है,
that comparison करो आयरन मास्टर और एडला का. So let's see. Iron Master proud and strict. She is kind and compassionate. Iron Master is judged by mistakes and angry. But she understood the compassion. He thought of calling the sheriff. She spoke in support of the peddler. The Iron Master felt cheated. She felt sorry for him. He wanted to send him away, but she wanted him to stay and have Christmas. The Iron Master, he followed rule and authority, whereas she followed values of humanity and love. ओके बेटा, तो ये 5 मार्क्स का आता है. इसको आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे कि कैसे वो प्राउड और स्ट्रिक्ट है ना. प्राउड एंड स्ट्रिक्ट है कि स्ट्रिक्ट क्यों है, वो जाता है आयरन मिल्स में रात को ताकि लोगों को गुड प्रोडक्ट्स दे सके, राइट. और जब इसको अक्वेंटेंस को लेके आता है, उसको इनवाइट करता है, ही सीम्स कि ही इज अ काइंड हार्टेड पर्सन, बट जब रियलाइज होता है कि ही इज रॉन्ग, तो ही गेट्स एंग्री ऑल्सो. Whereas the Adlaka, we have already seen how does she get. She gets him bathed, she gets her hair cut and shaved, she present him a old suit also, and then delicious Christmas meals also. So all these things are in favor of Adla, right? So Adla's kindness was the turning point in Peddler's life. Her respect and trust gave him back his lost respect and helped him change. A lasting kindness, Adla treated the peddler as human being and not criminal, right? And her kindness, dignity and compassion proved that love and trust can transform even the hardest heart. And you can say that kindness, love and compassion, it prevailed over greed, suspicion and anger. पेडलर जो दुनिया से नाराज था, जब एडला जैसे बंदों को देखा, उसने लेडी को देखा, his anger, his suspicion, everything, washed away. Okay, take the screenshot. Now, Adla's letter, she got a letter when they went to church the next day, right? After having an altercation with the peddler, लड़ाई झगड़ा हुआ उनका, लेकिन एडला ने बोला कि he will not go, he will celebrate Christmas with her. उसकी father और एडला, they go to church, and from there they come to know that one rat trap person, peddler, he had stolen Crofter's 30 kroners. So the father again gets angry with his daughter, but when she comes back, the servants tell her that the peddler has gone away, but he has kept 3 things for Adla. Let's see. Before leaving, the peddler quietly left a Christmas gift for Adla. The parcel was poorly wrapped and its contents were almost visible. What did it have? It had a small rat trap. It has 30 kroners notes and a letter addressed to Adla Wilmanson. ये 3 चीजें थी. 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. What was the Christmas gift for Adla? So आप ये लिखेंगे, there was a small rat trap, 3 10 kroner notes and a letter addressed to Adla, right? अब लेटर में उसने लेटर जो है ये एज इट इज मैंने उसमें से आपको दिया है, जो एनसीईआरटी की बुक में, ऑनर्ड एंड नोबल सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी. उसने स्टार्ट ही ऐसे किया कि तुम मेरे साथ अच्छी थी, सो आई एम एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, एज इफ आई एम अ रियल कैप्टन. So I do not want you to be embarrassed at the Christmas season by a thief, but you gave back the money. You give back the money to the this crofter, on the roadside, who had a money pouch hanging on the window pane as a bait for poor wanderer. The rat trap is a Christmas present from a rat who had been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got the power to clear himself. Written with friendship and high regard, Captain Vaughan's tale. मैंने, अगर आपने पोएम पढ़ी हो कीपिंग क्वाइट, उसमें हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन. जब वो 2 दिन वहां रहा, उसने अच्छा खाना खाया, उसने आराम से सोया, उसे किसी ने कुछ नहीं बोला, at that time he introspected, that people can be good and kind in this world, so he thought of transformation. He thought definitely he has to change because the lady thinks he is a captain. So उसे कैप्टन की तरह ही बिहेव करना चाहिए. So introspection बेटा, आपको भी लाइफ में
जब सारा दिन आपका निकल जाता है, रात को सोने से पहले 5 मिनट्स के लिए इंट्रोस्पेक्शन जरूर करना चाहिए कि हम कौन से हमारे गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, क्या रीजन है उसका, किसके साथ हमने अच्छा किया, डिड वी ब्रिंग स्माइल टू एनीबडीज फेस, कि हमने किसी के साथ गलत तो नहीं कर दिया, उसके लिए आप अपनी माफी मांग सकते हो। इंट्रोस्पेक्शन आपको हेल्प करता है, देन ओनली यू कैन बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, राइट। नाउ मीनिंग ऑफ द लेटर मैं आपको समझा देती हूँ कि एडला ट्रीटेड द पेडलर विद रिस्पेक्ट, काइंडनेस एंड डिग्निटी। शी नेवर जज्ड हिम बाय हिज अपीयरेंस और पास्ट, ओके, उसने उसको गंदा था, मैला को चला, देन ऑल्सो शी गॉट हिम, राइट। शी मेड हिम फील लाइक अ ट्रू कैप्टन, हर काइंडनेस एंड ट्रस्ट रिस्टोर्ड हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, ही वांटेड टू बिहेव लाइक अ जेंटलमैन वर्दी ऑफ हिज रिस्पेक्ट। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, you know, that peddler, why did he transformed, then you have to write down because of the Adla's behavior with him. She treated him with respect. She did not judge him by appearance or past. She treated him like a true captain, and her kindness, trust, it restored his self respect. उसका आत्म सम्मान उसने वापस दिया। सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज जब उसको मिली, उसने सोचा कि he should behave like a gentleman. Why Captain Vaughan's Tale? साइन भी उसने कैप्टन वॉन्स ट्रेल किया, क्यों किया, ये भी 2 मार्क्स का आता है। It was his new identity, because he became worthy of the respect Adla gave him because it was new identity, not a thief but as a man of honor. जब उसको कैप्टन कहा गया, वैसे तो एक भिखारी था, बेगर था, पेडलर ही तो था, बट स्टिल अब जब उसको कैप्टन बोला गया तो उसे लगा कि आई एम मैन ऑफ ऑनर, एंड एडलास फेथ इन हिम गेव हिम द स्ट्रेंथ टू राइज अबव हिज पास्ट। उसे लगा कि एडला को मेरे पे फेथ है, राइट, तो मुझे उस फेथ को बरकरार रखना चाहिए, उसको रखना चाहिए। हर ट्रस्ट रेज्ड अ थीफ टू द कैप्टन इन हिज ओन आइज, राइट। सो ही रिटर्न्ड, और उसके बाद क्या हुआ, रिपरकशंस क्या हुए, उसके रिजल्ट्स क्या हुए। ही रिटर्न्ड द 30 करोनर्स दैट डिड नॉट बिलोंग टू हिम. He asked Adla to give back money to the old crofter, right? And he also accepted his responsibility for his wrong deal, कि मैंने क्रॉफ्टर के साथ गलत किया, उसने एक्सेप्ट भी किया। एक्सेप्टेंस, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है बेटा। गलती हो जाए तो हमेशा सॉरी कहने में कोई बुराई नहीं है, कोई हम छोटे नहीं हो जाते, ओके। एंड शोड ग्रेटिट्यूड फॉर हर काइंडनेस, अगर आपके लिए कोई अच्छा करता है, काइंडनेस है, कुछ है, हमेशा ग्रेटिट्यूड, सबसे पहले भगवान का, उसके बाद माता पिता का, वो आपको इतना कुछ दे रहे हैं, सब कुछ है। पेडलर की जिंदगी देखो, अगर हम अपने आप को इन लोगों के साथ, या आप अपना चाइल्ड लेबर वाला चैप्टर जो लॉस्ट स्प्रिंग देखो, उसके मुकाबले में गॉड हैज गिवन यू सो मच, ही इज ब्लेस्ड यू इन अबंडेंस, ग्रेटिट्यूड। तो एडला ने भी एक पेडलर, एक गरीब भिखारी को इतनी इज्जत दी कि वो चेंज हो गया, राइट। सो मैसेज है कि काइंडनेस, कंपैशन एंड ट्रस्ट कैन ट्रांसफॉर्म अ पर्सन मोर इफेक्टिवली देन अ फियर और पनिशमेंट, राइट। एंड रैट ट्रैप क्या सिंबल करता है कि वर्ल्ड टेम्प्ट अस विद ग्रीड, वेल्थ, सेल्फिश डिजायर्स, दीज आर बेट्स ट्रैपिंग इन द रैट ट्रैप ऑफ रॉन्ग डीड्स, बट काइंडनेस, लव एंड ट्रस्ट कैन सेट अस फ्री। अगर हम सेल्फिश हो जाते हैं, ग्रीडी हैं, वेल्थ, मतलब हम अपना वेल्थ ही कलेक्ट करे जा रहे हैं, ये बेट्स हैं। लेकिन अगर हम किसी के काइंडनेस को, लव को, ट्रस्ट को समझेंगे तो वी कैन बी गुड ह्यूमन बींग्स। द रियल क्रिसमस गिफ्ट वॉज नॉट द रैट ट्रैप, द रियल क्रिसमस गिफ्ट वॉज नॉट द रैट ट्रैप, इट वॉज द न्यू लाइफ दैट एडलास काइंडनेस गेव टू द पेडलर। उसको नई लाइफ मिली थी, वो इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर टू यू बेटा? आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू। प्लीज टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस, राइट। लेटर के क्वेश्चन आपको आ सकता है, 2 मार्कर्स मैंने बता दिए हैं, 5 मार्क्स इसके भी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैक्सिमम इसमें आते हैं। स्टूडेंट्स, द रैट ट्रैप रिमाइंड अस दैट काइंडनेस एंड ट्रस्ट हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म अ पर्सन्स लाइफ। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन एंड विजुअल नोट्स हेल्प यू अंडरस्टैंड द चैप्टर क्लियरली। If you found this video helpful, please share, like and subscribe to Chalk, Chai and Zindagi. Keep reading your NCERT books, revise regularly, and I will see you in the next lesson. Happy learning.